सो गाइस फाइनली हम ऑटोडेस्क के अंदर चले आए हैं और इस वाले टूल को सिलेक्ट करके स्मैच ब्रश को एडजस्ट कर लेंगे। सो गाइस एडजस्ट करने के बाद इस तरह से हेयर को सेट करेंगे। गाइस वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा स्किप कर लेता हूँ। तो गाइस हमारा जो हेयर है वो अच्छी तरह से सेट हो गया। इसके बाद स्नैपसेट ऐप के अंदर जाएंगे। इसके बाद टूल इमेज को क्लिक करके ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और सैचुरेशन, एम्बेलेंस, हाईलाइट, सैचुरेशन को बढ़ा लेंगे और शेडो को थोड़ा सा कम कर देंगे। इसके बाद सिलेक्टिव टूल को क्लिक करके हेयर कलर को एडजस्ट कर लेंगे। फाइनली हमारा जो फ़ोटो है वो अच्छी तरह से बन चुका है। तो इसके बाद फ़ोटो को कर देंगे सेव।